हमें बहुत इंटरेस्टिंग पोएम जो होती है, ठीक है। सो summing it up, we can say कि ये जो laburnum top है, it is about the tree which is in the yellow September sunlight. The yellow colors of the leaves and all the seeds have fallen down, and this laburnum tree is so silent that it gives us a death-like picture. ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है, ऑटम सीजन है, एंड ऑटम सीजन के अंदर पूरे लीव्स एंड सीड्स जो हैं दे ऑल हैव फॉलन डाउन. Then to break this silence, suddenly a goldfinch comes with a switching chirrup, and suddenness and startlement, it ends up the silence of the tree. And just like a sleek, alert and abrupt like a lizard, this bird, as soon as it enters the thickness of the tree, now the babies sense the arrival of their mother. वो बोलना शुरू करते हैं. That is, the babies, those who were nestling in the tree, they also start chirruping. वो भी chirrup करना शुरू करते हैं. And the sound of their chirrup, sound of their wings, they all make it up to a machine sound. ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन की आवाज आ रही है. Now, with these sounds and the movements, whole tree starts shaking and trilling. And we can say that this way ये जो tree है, या ये जो हम बोलेंगे कि जो हमारी बर्ड है यहाँ पे गोल्डफिंच, she is the engine of the family. She soaks it to full, flirts out of the branch end and showing the barred face identifying mark with a very delicate whistle, chirruping sound. Now the bird, as soon as जैसे उन्होंने यहाँ पे life giving work कर लिया, now the bird is again moving ahead. मतलब she comes to the tree, provides food to the young ones and move to the other branch ends. इसका जो yellow strip face था, it is visible as her body is yellow color and it hides behind the yellow leaves of the tree. Okay, so only face was stripped. So only the dark stripped face was visible because rest of the body was what? Rest इनकी जो body थी ना, it was what? It was totally yellow, so it was hidden behind the yellow leaves. Now, this way, so after reaching the end of the branch, bird began making a very sweet chirruping sound, just like whispering. And what she does, she flies away towards the infinite sky, and once again it makes the laburnum tree silent and death-like. Okay, so clear था, ये बहुत ही, we can say a very sensible thing. So we can say that the poem, The Laburnum Top, is written by Craig Hughes. It is about a weeping relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. Tree is yellow, silent and death-like, and it is made alive by who? By the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree. Which tree? Where she feeds her young ones. But as soon as the bird once again leaves and to fly in the sky, the tree again becomes silent and death-like. Okay, so hope this is clear to you all. अगर ये आपको clear है, तो just आप एक बार अपना hand raise करें, so that after that हम इसके poetic devices पे move करते हैं. If the poem is clear to you all, because I hope it was very easy way में मैंने आपको उसको explain किया है, so I just have a hope कि सबको clear होगी. Yes. Bhanu, have you understood the poem? Yes. So as many hands are being raised up now, yeah. So the first poetic device that we are going to do is alliteration. Alliteration you must have done in your junior classes में आपने किए होंगे, at least 7th onwards, 6th onwards हम थोड़ा सा poetic devices को पढ़ने लगते हैं. And alliteration is simple to understand and it's simple to find out also, but थोड़ा सा presence of mind, थोड़ा सा alertness हमें चाहिए होता है. यही चीज यहाँ पे है. So basically what an alliteration is, I will explain you once again and इसके बाद में हम poem की alliteration find out करेंगे. So alliteration basically is a repetition of a consonant sounds at the beginning of two or more consecutive words. Okay, consonant sounds का repetition at the beginning of दो या दो से ज्यादा consecutive words के ऊपर जब repetition होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? alliteration बोलते हैं. For instance, इसके अंदर आप अगर alliteration देखोगे,
anyone is able to find out the alliteration? If anyone is there और कोई मुझे बताना चाहता है, if somebody is able to find out the alliteration, yes, you can raise your hand if anyone wants to answer. Yes, so यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो सितंबर एंड सनलाइट बोथ टुगेदर, so you can see S and S consecutive दो वर्ड्स हैं जिनमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, so this is alliteration. Now next is tree trembles. आपको दिखाई दे रहा है ट्री ट्रेम्बल्स, ये देखो यहाँ पे ट्री एंड ट्रेम्बल, तो टी और टी दो कॉन्सोनेंट साउंड एकदम कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, एलिट्रेशन हो जाएंगे. ओके, सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है सिमिली. सिमिली इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जो हम कंपैरिजन करते हैं विद अ वर्ड. कौन सा वर्ड इसमें यूज होता है, जैसे कि लाइक यूज करेंगे या फिर हम एज यूज करेंगे. यहाँ पे आप देखो स्लीक एज ए लिजर्ड आपको दिख रहा है ना, तो ये कंपैरिजन है गोल्ड फिंच का और लिजर्ड का, और कौन से वर्ड के साथ हुआ है, एज के साथ में. लाइक होता अगर यहाँ होता स्लीक लाइक अ लिजर्ड तो भी है सिमिली होता, और स्लीक लाइक एज अ लिजर्ड है तो भी ये सिमिली है. Then is metaphor. Metaphor is basically an indirect comparison. Metaphor क्या होता है, एक indirect comparison है between two things. ठीक है, दो चीजों का indirect comparison, जैसे कि इसके अंदर basically things नहीं, इसके अंदर qualities को compare किया जाता है. Now here यहाँ पे क्या qualities है, we can say that she enters the thickness and the machine starts up. So the noise created by the bird and the skids of the bird is compared to the noise made by who, noise made by the machine. तो यहाँ पे देखो दोनों की वॉइस क्वालिटी जो है उसका कंपैरिजन हो रहा है. द वॉइस क्वालिटी ऑफ हू, द वॉइस क्वालिटी ऑफ द बर्ड एंड द वॉइस क्वालिटी ऑफ द मशीन. ओके, now after this we can say personification. Personification is basically when a non living thing जो होता है उसको आप living बीइंग की तरह आप उसको जब पर्सोनिफाई करते हो, आप उसको एक पर्सन की तरह जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, दैट थिंग इज दैट द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन. जब आप किसी नॉन ह्यूमन चीज को बिल्कुल आप एट्रीब्यूट देते हो, उसको कैसा एट्रीब्यूट देते हो, बिल्कुल एक जो ह्यूमन बीइंग का होता है ना वो वाला देते हो नॉन ह्यूमन को, तो वो होती है पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. तो ये नॉन ह्यूमन चीज है ये ट्री, और ट्री कभी भी ट्रेम्बल और थ्रिल नहीं होती. ये एट्रीब्यूट आपने उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया है टू द नॉन ह्यूमन थिंग दैट इज ट्री, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे ये है पूरा का पूरा. नाउ वन थिंग कम दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे एडवर्ब को हम ट्रांसफर कर देते हैं टू दी अदर नाउन. एडवर्ब क्या होते हैं, द क्वालिटी ऑफ दी वर्ब, उसको हम ट्रांसफर करते हैं टू दी अनदर नाउन. दैट इज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क. बर्ड फेस इज व्हाट, इज एन एडवर्ब. उसको आइडेंटिटी मास्क, जब आपने उसको मास्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, व्हाट इज इट कन्वर्टेड टू, इट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. दैट इज आपने उसको एक और नाउन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है. ओके, तो हमने कौन से डिवाइसेस किए, वी डिड एलिट्रेशन, वी डिड मेटाफोर, वी डिड सिमिली, वी डिड ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड वन एक और किया था हमने, कौन सा किया था, पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो क्लियर है ये सारे. किसी को किसी इसके अंदर प्रॉब्लम है पोएटिक डिवाइस में, तो एनीबडी वांट्स टू आस्क कैन आस्क. यस एनीवन, यस एनीवन वांट्स टू आस्क, no. Okay, so we will move to the question answer part, that is what laburnum is called in your language. आप अपनी लैंग्वेज में laburnum tree को कौन सी ट्री क्या बुलाते हो. Now this is a question to be find out by you. आप इसको चेक करके आएंगे इस ट्री को आप लोग इन जनरल क्या बोलते हैं. ठीक है, which local bird is like the goldfinch. Now find out this also, you have to find out that कौन सी एक gold bird, गोल्डफिंच जैसी एक और कौन सी लोकल बर्ड होती है. ओके, नाउ थिंक इट आउट. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. आपने पोएम की बिगिनिंग और एंडिंग के बारे में कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस किया बताओ.
ये आपके सामने पोएम है, उसकी बिगिनिंग और एंडिंग बताएं। आपने कुछ नोटिस किया दैट इन द बिगिनिंग ऑल्सो द ट्री वॉज साइलेंट एंड एट द एंड ऑल्सो द ट्री गो बैक टू साइलेंस, तो वापिस से साइलेंस पे चली गई। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज टू व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन? यस, एनीवन? So देखो, earlier firstly I like to explain the first one again. To what is the bird's movement compare? Bird's movement was compared to the machine, and what is the basis for the comparison? The sound created by both. It seems as the machine is being started up. And why is the image of the engine evoked by the poet? क्यों evoke की उन्होंने? Because she comes and gives life to the children. She comes and gives life to the tree. So as soon as she is in the tree or on the tree, life starts. ट्री की भी लाइफ स्टार्ट हो जाती है एंड किड्स भी बोलना शुरू करते तो उनकी भी, तो ऐसा लगता है जैसे द मशीन हैज स्टार्टेड. Okay, and as soon as she leaves the tree again, both the things go back to silence. So it is evoked by the poet that the bird goldfinch जो है is the engine, as the image of engine. The goldfinch is represented as the image of the engine in this poem. By who? By our poet. What do you like most about the poem? Poem के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? The best thing which I think is that as soon as the bird enters the poem, the life that seems in the tree, that life that comes in the tree is really breathtaking. वो सबसे अच्छा part है, is the best. We can say the nature is at its best as soon as the bird enters and the life awakes up in the tree. Suddenly उसके अंदर जो life आ जाती है ना, वो उसका सबसे best part है. मे बी द आंसर कैन वेरी, आपको कुछ और बेस्ट पार्ट लगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट पार्ट. व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स? इसका क्या मतलब है द बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क? इस फ्रेज का यहाँ पे क्या मतलब है? वेयर द फ्रेज इज, एक बार हम फ्रेज को देखेंगे. यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है सेकेंड स्टैंजा का लास्ट वर्ड है ये, ठीक है, बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. तो हियर यहाँ पे ये बोल रहे हैं दैट द डार्क फेस विद स्ट्राइप, डार्क कलर्ड स्ट्राइप्ड फेस जो है इज द ओनली थिंग दैट इज विजिबल बिकॉज द बॉडी इज येलो एंड इट हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री. ओके, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज वाई शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. सिर्फ वो ही आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं जो उनका स्ट्राइप्ड फेस है ना, डार्क कलर का स्ट्राइप्ड फेस है. Otherwise, rest of the body is not visible because it is of yellow color and it is hidden in the yellow leaf. Last question is, what does the phrase her barred face identity mark mean? Okay, we have done this. Now, what do you like most about the poem? This is also done. So with this, we can say all the questions have been done. Now, note down the sound words. आप कुछ sound words हैं जैसे chirping हुआ, trembling हुआ, है ना, ये सब आप उसमें मेंशन करोगे. मूवमेंट वर्ड हुआ, शिवर हुआ, थ्रिल हुआ, फ्लाई हुआ, कमिंग हुआ, पर्चिंग हुआ. डोमिनेंट कलर इन द पोएम, विच इज द डोमिनेंट कलर इन द पोएम? यस, दिस आंसर कैन बी गिवन बाय समवन. यस, वंश इज गोइंग टू गिव मी द आंसर. यस वंश, म्यूट योरसेल्फ. मैम येलो कलर. येलो कलर, चलो वेरी गुड. मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये आंसर तो आ जाएगा आप लोगों के पास, है ना. गुड, चलो वेरी नाइस. सो विच वाज द कलर? डोमिनेंट कलर इन द पोएम इज येलो. ओके, सो नाउ योर टास्क इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस. व्हाट laburnum इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज एंड विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिश? ये दो. एनीवन स्टिल जिसको अभी ही इसका आंसर करना है कैन ऑल्सो गिव द आंसर. यस, एनीवन? नो वन. चलो कोई बात नहीं. ओके, so this is clear. So this was it a very nice poem? Yes, it was, because when something we can say, जो हम बोलेंगे the core theme of the poem, that it shows us the repaying relationship between the two. Further, it begins by describing the laburnum tree, which is pretty quiet in the yellow September light.
Poet notices the yellow leaves of the tree and seeds that have been fallen on the ground, and it resembles the season autumn. Okay, and it appears to be still fleetingly till the goldfinch bird comes and perches on the tree, because as soon as it perches there, bird starts chirping, and as soon as the chirping sound came, it seems as the engine had been started, because on the arrival of the mother goldfinch in the tree, the young ones, they suddenly come to life. Now, upon the arrival, tree and the nestling birds, they all started chirping and they become alive. Now, she keeps flying in and out just to feed the young one. जाती दाना लेकर के आती, अपने बच्चों को दाना खिलाती, तो ये मूवमेंट चल रहा था. नाउ दिस होल चर्पिंग एंड दिस मूविंग इन एंड आउट, ये पूरे मूवमेंट को किससे सिंबलाइज किया है? वो मशीन. एंड thus when once again she leaves the tree once again do go back into the illusion silence. तो वो वापस अपनी उसी साइलेंस के अंदर चली जाती है. ओके, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीपेइंग नेचर ऑफ दिस पोएम. आपने देखा रीपेइंग का जो पूरा रिलेशनशिप था यहाँ पे बिटवीन द टू, एंड द टू वर टू, ये दो कौन थे? द बर्ड एज वेल एज दी जो हमारी ट्री है. एंड विच ट्री इट इज द लैब्रिनम ट्री. एंड विच बर्ड इट इज? बर्ड कौन सी है? गोल्डफिश bird. Okay, so I hope the poem and everything is very clear to you, and I think I find it a nice poem written by Ted Hughes. Okay, so this was all. Today we did one poem. You will be provided with the notes of it. Just complete them and keep sending it to me for checking. Rest, if there are any queries, आप go through करेंगे एक बार उसको, read it out nicely, and if there are any queries with the beginning in the tomorrow's class of starting में या एट द एंड, आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. एंड रेस्ट ऑल्सो यू कैन आस्क मी क्वेरी एनी टाइम यू फील लाइक. ओके.